गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आज जो 3 अगस्त से जो नया क्लोजिंग था दैट केम इनटू इफेक्ट, सो डोंट बी सरप्राइज। अचानक आपको चार्ट्स पे एकदम दिख रहा मार्केट ऊपर है, तो हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस दैट? गिव मी यस और नो। या विजय, गुड इवनिंग। So even I was surprised। मैंने भी 2-4 प्लेटफॉर्म में चेक किया, मैं बोला अचानक इतना 100-200 पॉइंट ऊपर क्यों चला गया। या कमलेश, आज देखा आपने? बिकॉज मैं देख रहा था मार्केट यहाँ आया, अचानक देखा तो मार्केट में ऐसी कैंडल आ गई। तो ये जो नया क्लोजिंग आया 315 के बाद, ये उसका इफेक्ट है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड और सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। क्लियर? या इट्स अ कैश इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट एंड तो मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन था, तो मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म पे चेक किया, देन आई सेड फाइन, ये कैश का इफेक्ट है। सो बिफोर आई स्टार्ट, आई रीड आउट द डिस्क्लेमर which says this is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So 3 अगस्त को देखते मार्केट में क्या चेंज हुआ। देखिए, आज थोड़ा आपको ध्यान देके सुनना पड़ेगा बिकॉज आज मंडे था। सो सिग्निफिकेंस क्या है आज के मंडे का? अगर आप आर यू गेटिंग माई ऑडियो लाउड एंड क्लियर? कोई रिस्पॉन्स आई एम नॉट गेटिंग। लास्ट आई गॉट फ्रॉम कमलेश। काइंडली कंफर्म इट टू मी फ्रेंड्स। ऑल वेल। देखिए, गैप तो आप बहुत देखते हैं डेली चार्ट्स पे। यहाँ पे भी गैप था, यहाँ पे भी गैप था, यहाँ पे भी गैप था, और आज ये गैप आया यहाँ पे। सो देखिए, फर्स्ट इंस्टेंस पे आपको लगेगा नहीं ये तो गैप वाला ही मार्केट है, बट यू आर रॉन्ग। ये जो गैप है ना, ये वीकली गैप है। अभी मैं डेली टाइम फ्रेम आई एम चेंजिंग इट टू वीकली। So now can you see we have seen a gap up on the weekly time frame charts. Clear everybody? Screen not shared? Okay. I'll just share my screen. So I'll have to read out the disclaimer. किसी ने देखा नहीं होगा. Yeah. So I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. Now my screen is shared because tech check at my side is showing the screen is shared. थोड़ा लैग चल रहा है, गेस। यस, फाइन। तो देखते 3 तारीख को व्हाट्स लाइज अहेड, फाइन। आई एम प्लेइंग द सेम सेशन ऑन माय मोबाइल। आई कैन क्लियरली सी टुडे देयर इज अ लैग इन यूट्यूब, और लैग थोड़ा लैग नहीं है, आई थिंक इट्स काफी लैग है, बट डजंट मैटर। अगर यहाँ पे लैग दिख रहा है तो एवरीबडी विल बी सीइंग द सेम थिंग। नाउ अतुल, आज जो नया क्लोजिंग आया 3 अगस्त का, we have gone into a regime which is the new regime of closing. So let me start. I guess the lag will settle down because देखिए, आज का ये जो गैप है ये वीकली गैप है। आप डेली चार्ट्स पे भी गैप देखते हो, बट ये गैप का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। Now this is the gap on the weekly price chart. Pay attention. वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा था पोस्ट कोविड 5 से 6 बारी ऐसे गैप्स आए। मैं इतने दूर तक भी नहीं जा रहा हूं कोविड तक, मैं यहां पे ले रहा हूं फ्रॉम दिस लो। सी यू हैड अ गैप अप ऑन द वीकली चार्ट्स। ये जो अभी आप देख रहे हो ये वीकली चार्ट है। अगेन यू हैड अ गैप अप ऑन द वीकली चार्ट। नाउ अगेन यू आर हैविंग अ गैप अप ऑन द वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट्स पे जब हमें गैप दिखते हैं ना, सो वी हैव टू टेक अ नोट ऑफ इट।
बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम पे रोज हर वीक गैप्स दिखता नहीं है। एक बार वीकली में आपको गैप दिख गया, दैट मीन्स वो गैप पे एक लाइन बना दो। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा, लेट्स बी पॉजिटिव ऑन द मार्केट्स। गेटिंग इट एवरीबॉडी? गिव मी अ यस और अ नो। या थोड़ा लैग है, आई कैन मेक इट आउट। नो, ये वीकली के नीचे गया नहीं मार्केट, गैप के नीचे। फिर से यहां पे आप देखो, there was a gap on the weekly chart. It had did not go below the gap on the weekly chart, right? Puncher 4161 possible. It's extremely possible. Now, just look at here. आज भी एक वीकली चार्ट पे गैप आया, तो ये गैप का सिग्निफिकेंस बहुत हाई है। बिकॉज देखिए, वीकली में जब गैप बनता है तो हम बोल नहीं सकते क्या ये ब्रेकअवे गैप है, कि मार्केट एक बार नरम होके गैप भर के जाएगा एंड देन द रैली विल कम। यहां पे भी आप प्राइस की टेंडेंसी देखो, इट जस्ट फिल द वीकली गैप एंड स्टार्टेड द रैली। गॉट इट एवरीबॉडी? गिव मी अ यस और अ नो। सो अभी एज अ ट्रेडर हम यहां पे एक लाइन बना के रुक जाते हैं। लेट्स मेक अ लाइन हियर विच इज 24,400 and stop there. Now things have changed drastically आज सोमवार के दिन, the moment we saw this weekly gap। एक बार मुझे weekly gap दिखता है ना, so I pay lots of attention and importance to weekly gap। इससे हो सकता है कोई नया मूव स्टार्ट हो रहा हो, इससे हो सकता है जो डिप्स है वो गैप तक ही लिमिटेड रहे, फिर मार्केट टर्न लेगा। सो आज काफी एक सिग्निफिकेंट है। सेम वे अगर देखिए, यहां पे भी एक वीकली गैप आया था, राइट? वीकली गैप भर के एक तेजी हुई है। सेम वे जब गैप वीकली में डाउन साइड आता है, यहां पे डाउन साइड गैप आया तो एक जोर की मंदी हुई। जब वीकली गैप को आपको इग्नोर करना नहीं है। क्लियर एवरीबॉडी? आई विल वेट फॉर योर यस और नो। ओके, सो नाउ ये वीकली गैप पे लाइन बना के सारा प्लानिंग इसके बेस पे करो अभी, राइट? सो नाउ दिस वीकली गैप इज देयर। सो ये पूरी कैंडल को मैं अभी यहां से ट्रेंड सपोर्ट ले रहा हूं। मार्क माय वर्ड्स, ट्रेंड सपोर्ट, नॉट शॉर्ट टर्म स्विंग सपोर्ट। एंड मार्केट हैज क्लोज्ड अबव दिस हाई। ये क्लोजिंग का स्पाइक था, बट पूरा दिन का स्पाइक था। It has closed above the 200-day exponential moving average also. So now the trajectory of the markets जिसको हम बोलेंगे ना, again we go to channel। पहले ये छोटा channels पे हम लोग काम करते हैं। So this is the channel which market is now heading for। अगर ये चैनल का अपसाइड इज समवेयर अराउंड 24,900, सो यहां से वी आर गोइंग टू फॉलो दिस पैटर्न। देखिए, कभी भी जब भी चेंज आता है ना, सो वी नोटिस दैट चेंज एंड एज पर द चेंज वी फॉलो द पैटर्न्स। गेटिंग इट? सो यहाँ पे एक जो चेंज हमें देखने को मिला है इज दैट नाउ वी हैव फॉर्म्ड अ गैप ऑन द वीकली चार्ट्स, एंड द गैप ऑन द वीकली चार्ट्स हैज क्रिएटेड अ चैनल ऑन द निफ्टी। सो वंस यू हैव दिस, फिर यहाँ पे हम मेजरिंग रूल्स डालते हैं। सो अभी मुझे नहीं लग रहा जब तक ये गैप कोई भी डिक्लाइन डिप शॉर्ट टर्म हो ना, तो गैप पे सपोर्ट अभी आना है। बिकॉज यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अभी आप साइकिल स्टडी इन टर्म्स ऑफ प्राइस देख लो, दिस मूव वाज 6%। ये लो से 6% के लिए अभी भी काफी जगह है 25,000 तक। गेटिंग इट? So this we would call it as a rule of equality। This move within this channel, अगर रूल ऑफ इक्वालिटी हम प्लॉट कर रहे हैं, so this move within the channel should be somewhere close to upper end। Is it making sense everybody? Give me a yes।
एब्सोल्युटली नॉट हरप्रीत, अभी नई रिजीम आए तो हमें भी देखिए एडजस्ट करना पड़ेगा हरप्रीत, ये जो 3:15 बजे बंद हुआ तो। सो नाउ दिस इक्वल्स टू दिस शोज दैट कि कहीं ना कहीं 24,825,000 की तरफ मार्केट है। देखिए बॉटम लाइन अभी सपोर्ट पे मिल रहा, गैप पे मिल रहा। एवरीबडी क्लियर अबाउट द रूल ऑफ इक्वालिटी, चैनल एंड द वीकली गैप। वीकली गैप को कभी भी हल्के में मत लो, नहीं तो हो सकता है नेक्स्ट मूव मिस हो सकता है आपका। सो दैट्स व्हाट वीकली गैप्स आर ऑल अबाउट। सो आज का जो हाईलाइट है वो है वीकली गैप एंड द चैनल। गिव मी a yes everybody if you have understood it. I'll either wait for your yes or a no. आज थोड़ा डेट वीडियो में और वॉइस में लैग है, बिकॉज सेम सेशन में अपने मोबाइल पे भी देख रहा हूं तो आई कैन क्लियरली सी इट। सो दैट इज निफ्टी, फाइन। उसके बाद understood, okay, after that the importance of this weekly gap is a support. Now let me remove everything. दूसरा चीज जो हमें देखना है कि एक बार जब कंसोलिडेशन टूटता है ना, तो मार्केट इज पॉइज्ड फॉर एन अपसाइड। सो द फर्स्ट मेजरिंग रूल्स विच वी टेक इज द रिट्रेसमेंट। देखिए आज एग्जैक्टली मार्केट 62% रिट्रेस कर चुका है। नाउ 62% रिट्रेसमेंट का मतलब यह है कि बिकॉज ऑफ ब्रेक, जनरली क्या 62% रिट्रेसमेंट पे हाई बनता है इफ देयर इज अ पुल बैक। मैं इसको पुल बैक नहीं मानता हूं, मैं इसको क्लीन ब्रेकआउट मानता हूं। सो आई विल नॉट गिव दैट मच सिग्निफिकेंस टू द 62% रिट्रेसमेंट लेवल। ठीक है, यहाँ पे निजक रिएक्शन आ सकता है, थोड़ा रुक सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बट माई होल फोकस इज द वीकली गैप। गेटिंग इट एवरीबडी? मेरा पूरा फोकस इज दिस वीकली गैप। एंड देन यहाँ पे एक गैप है, so are we heading to fill the gap which is coming to around 25,000? That was the channel high. So from here on this is the market and this is the pattern, और हम यहाँ से ये follow करेंगे, and this leg equal to this leg. प्रीमियम हैज नॉट मूव टू, नहीं मूव करेंगे ना, ये क्लोजिंग का सेटलमेंट था। आफ्टर दिस लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑल्सो देखिए आज आप कंफ्यूज मत हो, बिकॉज फ्रॉम टुडे द न्यू रिजीम ऑफ क्लोजिंग हैज कम इन। बैंक निफ्टी भी अच्छा ऊपर कर दिया 57, हाँ 600 पॉइंट ऊपर वहां से कर दिया क्लोजिंग में। अभी बैंक निफ्टी ने क्लियरली 200 दिन के एवरेज के ऊपर तो क्लोज दे दिया। इट हैज क्लियरली मूव्ड अबाउट द 200 डे मूविंग एवरेज। लेट मी प्लॉट इट फॉर यू। ये 200 दिन का एवरेज है बैंक निफ्टी का। The fact that a strong close above the 200-day moving average is positive as far as the swing is concerned. Now I remove this. क्या बैंक निफ्टी में भी वीकली गैप है? The answer is yes. In bank nifty also we have a weekly gap. So from here pattern perspective say this itself now becomes a trend support. It's not a swing support के 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद, it's a trend support. जब तक ये लो नहीं टूटता है, let's conclude that the swing or the direction for the market is positive. Got it everybody? After this I come to the daily price charts. और डेली प्राइस चार्ट्स में दिस इज द हाई ऑफ बैंक निफ्टी। निफ्टी ने ये हाई निकाल दिया, बैंक निफ्टी ने अभी तक निकाला नहीं है। सो नाउ आई टेक दिस। क्या हम यहाँ पे एक चैनल बना सकते हैं? यस, परफेक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया, बट इसको चैनल नहीं बोलेंगे बिकॉज वी नीड 2 टच पॉइंट्स। तो इसको हम वी विल क्रिएट दिस ट्रेंड लाइन। So Bank Nifty was a classic confirmation trend line because 2 touch constructs a trend line and the third touch confirms it. So Bank Nifty with a support at the weekly gap, the nearest resistance is 58,700. सो नाउ यू सी, जैसे आज आपने अचानक 600 पॉइंट का क्लोजिंग में गैप देखा, निफ्टी बड़ी कंफ्यूज मत हो सका कल रिट्रेस भी कर गए। मेरे लिए भी एकदम नई चीज है, आज से ये चीज लागू हुई है, फाइन। सो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, फॉलो योर चार्ट्स। सो दैट्स बैंक निफ्टी। जब मैं बोलता ओके
यू वांट एक्सप्लेनेशन, आई विल गिव यू। जब भी हम ट्रेंड लाइन या चैनल्स बनाते, फर्स्ट टच इसको बोलते 1, इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, सेकेंड टच इससे कंस्ट्रक्ट हो गया, and the third touch somewhere here confirms this trend line which says that जब तक बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, the trend for the market is strongly positive. Got it everybody? Yeah, thank you Panchar 4161. So I don't know that's how it's written, it's Punchar or Panchar, or that's the name which, okay, Vijay, okay. So that's how markets are friends. निजक रिएक्शंस आ सकते हैं, थोड़ी हिकअप्स आ सकती है, बिकॉज देखिए इतने स्ट्रॉन्ग मूव के साथ मार्केट एक ओवरबॉट भी हो जाता है, बट ओवरबॉट मार्केट जब रहता है, बैंक निफ्टी यहां तक ओवरबॉट हो रही है, तो मेरा कंसर्न ओवरबॉट नहीं है, मेरा कंसर्न है इफ देयर आर शॉर्ट टर्म डिप्स और रिएक्शंस, निफ्टी तो बैंड के ऊपर चली गई आज, गेटिंग माय पॉइंट, इन दैट केस एनी कूल ऑफ है, ये वीकली गैप पे सपोर्ट लेने आता है। So that's how markets are. Don't get confused by the last minute of the close, because आज से नया regime आया 3rd of August से, where the closing has been closing में एक changes आया, 3:15 बजे तक आप ये नहीं ट्रेड कर सकते हो, ये closing रहेगा, so that has created a big confusion in all traders mind. इसमें confusion कुछ नहीं है, जो हुआ दिख गया और हमें उसके साथ ही अभी ट्रेड करना है। ऐसा है तो कल सवेरे 15 मिनट रुक जाओ, देखो क्या ऐसा फॉलो आता है कि अगेन इट रिट्रेसेस बैक टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड। ये सब आंसर्स हमें कल मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे। ये सब प्राइस एक्शन है, एंड आज मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, आपने भी फर्स्ट टाइम देखा है। इसके बाद कल हम जब देखेंगे ओपनिंग में, तब हमें आइडिया आएगा। अदरवाइज इन दिस सेशंस, वो हम कल इंट्राडे में सवेरे 8:45 को विल डू दैट। इन दिस सेशंस वी आर जस्ट डूइंग द स्विंग। कहीं पे भी डायरी में ट्रेडिंग डेस्क पे सर नोट कर लो, वी हैव सीन अ गैप अप ऑन द वीकली चार्ट which is an event, technical event of a very big nature by itself, right? I don't know, Madhur. So that's all from my side, friends. Again, we'll meet tomorrow at 8:45 in the morning.